بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Islamic subjects like Hifz of Quran, Islamic studies and Arabic language. Academic education deals only worldly life, while Quran guides the success for both the worlds. It's a lifetime opportunity for the Muslim parent to inculcate moral values practically in our children and to get success here and in Akhirah. That is why this kind of education and school is a must. And the only power over the entire universe. Allah is the creator of everything and the sustainer of the whole universe. Allah controls everything and the sustainer of the He manages all affairs. Allah is the controller of all that happened. He knows everything that has happened, that will happen, and how it happened. No offense occurs in the world except by His will. He's all hearing, all seeing, all knowing. His knowledge encompasses all things. All affairs of the universe are entirely with Him, His knowledge and His control. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Perform well. I would like to call the students of class 5 to speak about Islam and acts which nullify Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Muskan Mavish, daughter of Sheikh Imran. I am in class 5. Inshallah, today I will talk on the topic Islam, the eternal religion. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna allazina indallahil Islam. Translation. Taken from Al-Imran, ayat number 19. Islam is the religion of Allah. Allah sent His messenger to teach people Islam. Allah also sent books of guidance through His messenger. Many prophets were sent by Allah to teach people Islam, like Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, and Muhammad sallallahu alayhi wasallam were some of them. Muhammad sallallahu alayhi wasallam was the last prophet sent by Allah to complete his religion. Some people of Makkah accepted Islam. Other Makkans opposed this religion. They persecuted the new Muslim and tried to kill Prophet sallallahu alaihi wasallam. Na'uzubillah. So Allah ordered the Prophet sallallahu alaihi wasallam to immigrate to Medina. Most people in Medina accepted Islam as their religion and way of life. Medina became the center of Islamic teaching, preaching and government. Many Sahaba, companions of the Prophet, went to different places to teach people Islam. Now Islam is spread all over the world. It is a practical religion. This religion is practiced everywhere in the world. It is a growing religion. Indeed, the true religion of Allah is Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbil alamin. As-salatu was-salam ala rasulihil kareem wa ala alihi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Myself, Muhammad Adnan, son of Muhammad Ashraf. I am in 5th standard. Inshallah, today I will talk on the topic acts which nullify Islam. Bismillahirrahmanirrahim. لئن أشركت ليحبطن أعمالك ولا تكونن من الخاسرين. Translation: If you should associate anything with Allah, your work would surely become worthless, and you would surely be among the losers. Taken from Surah Zamr, ayat number 65. There are some beliefs and acts which destroy them. He commits shirk. His deeds will become null, void unless he repents. Only with the real tawbah can one return to the fold of Islam. These acts are: first, calling other than Allah for help, such as the prophets, saints, dead persons, etc. Second, slaughtering animal, making dua, supplication to other than Allah, because dua is an act of worship. Fourth, making tawaf, circling around the grave, as it is an act of worship. Tawaf should only be done around the Kaaba, the house of Allah. Fifth, depending on or putting one's trust in anyone or anything other than Allah. Sixth, denying any of the pillars of Islam. Seventh, abandoning Islam for another religion. Eighth, denying Allah and His attributes. 9. Bowing or prostrating before any object or person, living or dead, with the intention of worshipping them. For this is an act of worship done for Allah alone. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. इसमें सैयद रेहान अली व इसमें जनाब सैयद आदम अली साहब अना फी सफ़े राबी. اسمي عبد الرحمن ود أنا الصف الأول. الآن أنا أقرأ أمامكم سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. तर्जुमा. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है. क्या तूने उसे भी देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है? यही वो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता. इन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपने नमाज से गाफिल है, जो रियाकारी करते हैं और बरतने के अहम चीजों को रोकते हैं. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इसमें मुशातरिन व इसमें भी मोहसिनुद्दीन अना मिना सफ़िल अव्वल. इसमें चाहत फातिमा व इसमें भी अहमद पाशा अना मिना सफ़िल अव्वल. अल्लाना अना अकरम अमामकुम दुआ आफ्टर स्नीजिंग. अच्छी Alhamdulillah, all praise be to Allah. Yarhamukallah, may Allah have mercy on you. Yadikumullah wa islam balakum, may Allah
الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام वतक़राउ अस्सलाम। और उसको भी जिसको नहीं पहचानते जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome all of you with Islamic reading. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself, Shahreen Araba, daughter of Sayyid Raza. I'm in second standard. Inshallah, today I will talk on the topic Salam Islamic reading. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sala Nabi sallallahu alayhi wa sallam أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولا من لم تعرف. Translation. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu reported, a man asked Prophet sallallahu alaihi wasallam, which part of Islam is best? He said, to provide food and as a salam. Those Muslims you know and those you do not know. Taken from Al-Bukhari and Muslim Sharif. I offer salam to every Muslims. I say to them, Assalamu alaikum. It means peace be upon you. Reply to my salam by saying, Wa alaikum assalam. It means and peace be upon you too. Peace is from Allah, the most merciful. Salam is a good wish. It is an expression of mutual love among the Muslims. It helps to create a good relationship among Muslims. It shows that all Muslims are brothers. So, saying salam is one of the best manner in Islam. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. నా పేరు షిఫా ఫిర్దౌస్. నా నాన్న పేరు సయ్యద్ రజాక్. నేను అల్ఫలా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో చదువుతున్నాను. అచ్చులతో పదాలు వివరిస్తాను. ఆ అంటే అల్లా, ఆ అంటే ఆదం, ఈ అంటే ఇస్లాం, ఈ అంటే ఈమాన్, ఉ అంటే ఉదయం, ఉదయం మీన్స్ మార్నింగ్, ఊ అంటే ఊరు, ఊరు మీన్స్ విలేజ్, రు అంటే ఋతువు, ఋతువు మీన్స్ సీజన్, రు అంటే బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం, ఏ అంటే ఎద్దు, ఎద్దు మీన్స్ ఆక్స్, ఏ అంటే ఏనుగు, ఏనుగు మీన్స్ ఎలిఫెంట్, ఐ అంటే ఐసు, ఐసు మీన్స్ ఐస్, ఓ అంటే ఒంటె, ఒంటె మీన్స్ క్యామెల్, ఓ అంటే ఓడ, ఓడ మీన్స్ షిప్, ఔ అంటే అవుటు, అవుటు మీన్స్ క్రాకర్, అంటే అంబరం, అంబరం మీన్స్ స్కై, ఆహా అంటే అంతఃపురం, అంతఃపురం మీన్స్ ప్యాలెస్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.
के फूल। अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल, अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल। छोटा सा है खूबसूरत जहां, हर सिमत है नूर का हर समा। बढ़ता हुआ खैर का कारवां, कल के सितारों की है कहकशां। यहाँ पे मबनी है इसके उसूल, इसमें महकते हैं उम्मत के फूल। अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल, अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल। सिखलाते हैं नेकियों का हिसाब, इसमें पढ़ाते हैं अपनी किताब। है लाज़मी आखिरत का हिसाब, खिलते हैं सुन्नत के इसमें गुलाब। और यहाँ पे मबनी है इसके उसूल, इसमें अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल।
परेशान हो? देखो ना बेटी, मैं शिहाद को कब से आवाज दे रही हूँ और वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं। ठीक है अम्मी, मैं भी बुला लाती हूँ। शिहाद, 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 अम्मी तुम्हें कब से बुला रही हैं? जाओ यहाँ से, अम्मी को तो कुछ काम ही नहीं है। जाओ यहाँ से, अम्मी को तो कुछ काम ही नहीं है, हर वक्त मुझको ही बुलाते रहती है। ऐसा नहीं कहते शिहाद, जल्दी आओ। क्या हुआ बेटी? क्या बताओ अम्मी? ओह, उनको दे दो। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? देखो ना, मैं शिहाद को कब से आवाज दे रही हूँ और वो है कि आता ही नहीं। मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, मैं अभी बुला लाता हूँ। मम्मी, आपका सर है यहाँ पर हर वक्त दुखते ही रहता है, क्या आप सर से चलती हो? बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो अपनी माँ से? मेरे स्कूल में ये नहीं सिखाते कि बात कैसे करना मम्मी से। अपनी बहन को देखो, वो कितनी नरमी से बात करती है। वो तो अल्फला स्कूल में जो पढ़ती है और मैं इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ। आपने ही तो डाला है। ठीक है बेटा, मेरी ही गलती थी। अगले साल से मैं तुम्हें भी अल्फला स्कूल में डाल दूंगी। यार, क्या हुआ चाचा? तुम्हारी अम्मी कब से तुम्हें बुला रही है? क्या हुआ चाचा? ये सब तुम्हारे इंग्लिश मीडियम का नतीजा है। अगर तुम अपनी बहन के साथ अल्फला स्कूल में पढ़ते तो यह हाल ना होता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। दूसरी मर्तबा जब इसने फिर से पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। तीसरी मर्तबा जब इसने फिर से पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। चौथी मर्तबा जब इसने फिर से पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। सही बुखारी हदीस नंबर 5971। मुझे माफ कर दीजिए चाचा, मुझको इसका इल्म ना था। मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने दीदी की तरह अल्फला इंटरनेशनल स्कूल में डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, मेरी ही गलती थी। अब मैं ऐसा ही करूंगी। ये लो, मेरी दवाई ला दो। थैंक यू मम्मी। बेटा, तुम ये अपनी बहन को भी क्यों नहीं समझा देते? सुनो बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में फरमाया है कि खैरा उम्मती लिन्नासी कुंतुम तमरूना बिल मारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर। तर्जमा, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई हो लोगों की भलाई के लिए। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। जब इस दूसरी मर्तबा जब इसने फिर से पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर तीसरी बार जब इसने फिर से पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर चौथी बार जब इसने फिर से पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। सही बुखारी हदीस नंबर 5971। मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई। माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो।
या अल्लाह मुझे माफ फरमा। या अल्लाह मुझे माफ फरमा। या अल्लाह इन्हें माफ फरमा। जज़ाक अल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MashaAllah, I would like to call the students of class 1 and class 5 to explain about articles of faith. Alamin, as-salatu was-salam ala rasulil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Muhammad Ajat Qasim, son of Muhammad Abdul Ahad. I am studying in 5th standard. Inshallah, today I will talk on the topic Articles of Faith, Arkanul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. And Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tu'minu billahi wa malaikatihi isjudu wa kitabahu wal yawmil akhiri wa qadri khairi wa sharri. Translation: Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu reported, the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Iman is to believe in Allah, to believe in His angels, to believe in His books, to believe in His messengers, and last today, and to believe in divine degree, both the good and bad. Taken from Al-Bukhari and Al-Muslim Sharif. To be a Muslim, one must be in certain articles of faith. These articles are called Arkanul Iman, pillars of faith. These basic articles of faith are: first is to believe in Allah, second is to believe in His angels, third is to believe in His books, fourth is to believe in His messengers, fifth is to believe in the last day of judgment, sixth is to believe in the divine degree, both the good and bad. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Saliha Raheen. I am in 2nd standard. Inshallah, today I will talk on the topic Love for Allah the Almighty. Wallahu yuhibbul muhsinin. And Allah love the doers of good. Taken from Surah Al-Imran, ayat number 148. We love Allah because He is our Lord. He is the Lord of all. We love Allah because He created us. He created us in the best form. We love Allah because He gives us everything. He gives us everything, all we need. We love Allah because He cares for us. We love